Hi everyone, so today we'll be doing drafting of a child bodice block for which we need the basic measurements, and these are the measurements and the size of the paper which I'll be discussing in details. And this is the constructional line that we'll be discussing again in details in the further video. I'll be explaining it to you step by step. So child bodice block बनाने के लिए the basic measurements that we require is suppose we are making it for an age group of 2 to 3-year-old child. So the length will be approximately 9 inch, and we need the round chest measurement which is 22 inches, and we need the across back measurement which will again be 9 inches. So ये तीन basic measurements required होते हैं in order to make the child bodice block. Then we need to calculate the size of the paper. Size of the paper calculate करने के लिए what we need to do, the length will be equivalent to the length of the bodice. जो भी bodice length है वो same रहेगा, so it is 9 inches. Then we need to calculate the width of the paper. So width is half of the round chest measurement plus 1 inch for ease will be taking. So it will come out to be approximately 12 inches. So this is the width that we'll be needing. So the length of the paper will be 9 inches and the width of the paper will be 12 inches. So we just need to make a block. इस तरह से we'll make a block जिसका length will be 9 inches and width will be 12 inches. इस तरह से हमने एक पेपर का block cut कर लेना है, and then on that we'll be doing the drafting. So let's begin with the drafting. First of all, we need to make a block of 9 by 12 inches where length we are taking 9 inches and this width is 12 inches. We'll get a block, ऐसा block बन जाएगा. Next what we have to do is we have to divide this block 9 inches का center point ले लेंगे हम और center पे एक line लगा देंगे. ठीक है, so we have to divide it into half inches and into 2 equal parts. Next what we need to do is we are going to name it A, B, C and D. उसके बाद this point is E and E dash. So ये points मिले. अब हमने point AE का भी center लेना है, उसको भी बीच से divide करना है. AE and DE को we'll again divide it into equal parts. इसका midpoint और एक straight line will get, and then again we'll name it as F and F dash. Now again AF and DF dash, इसका फिर से हम center point ले लेंगे, mid point ले लेंगे और उस पे एक line लगाएंगे. So this is again the half of it. So we'll name it as G and G dash, and then again half of AG and DG dash. उसका भी half कर लेंगे और एक center से line लगाएंगे. We'll name it as H and H dash. So ये हमारा ब्लॉक ऐसे रेडी हुआ. देन विल डिवाइड, जो हमारा विड्थ है उसको भी हम सेंटर से डिवाइड कर देंगे. तो ए डी का भी सेंटर ले लेंगे एंड बी सी का सेंटर ले लेंगे एंड विल जॉइन इट विद अ स्ट्रेट लाइन एंड विल नेम इट एज ओ, दिस मिड पॉइंट एज एक्स एंड ओ डैश. ये पॉइंट बना हमारा. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, फ्रॉम ए वी हैव टू मूव टूवर्ड्स पॉइंट ओ such that A dash is equivalent to 1/12 of round chest measurement, that is 22 का 12वां हिस्सा. So it will come out to be approximately 1/8 of an inch. ये हुआ. So 1/8 of an inch अंदर जाके we'll get the point A dash, and then we'll join A dash and H with a curved line. ये हमारा back neck का curve है. Next what we have to do, from point F will go in to point K, which is half of across back measurement. So हमारी across back measurement 9 inches थी, उसका half ले लेंगे. So it is 4.5 inches हमने ले लिया. So this will get. Next इस point पे, point K पे हमने एक perpendicular drop करना है.
नीचे टिल द लाइन ई डैश तक एंड ऊपर टिल द लाइन एच डैश तक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा. So we got the point K, we'll name it at bottom पे हमने इसको K dash name करा and ऊपर we'll name it as K double dash. ये हुआ perpendicular. Then what we have to do, we have to go up from K double dash to point L such that K double dash L जो है it is equivalent to 1/4 of an inch. So 1/4 of an inch हम ऊपर जाएंगे and K double dash से हम 1/4 of an inch ऊपर जाएंगे और हमें point मिल जाएगा L. फिर उसको हमने A dash and L को हमने straight line से join कर दिया like this. We'll join it with a straight line. So ये हमारा shoulder slope हो गया. Then next from point L हम will move towards right. हम right side जाएंगे point L से to point L dash such that L dash is 1/2 inch, right? And फिर हमने L dash और K को straight line से join करा and K and X को will join it with a curve, arm hole curve बन जाएगा. So इस तरह से हमारा L dash K and X with a arm hole curve बन गया. Next from point D we will move towards inward to D dash. It is equivalent to A dash, that is 1.8 inch. So D dash is equivalent to A dash equal. Then D dash और L dash को हम एक straight line से join करेंगे. D dash and L dash को straight line से join कर दिया. Next we'll join D dash and F dash with a curve. D dash and F dash with a curve. So ये हमारा front neck curve हो गया. Now we'll measure A L dash जितना भी length है उसको हम measure करेंगे and similarly D dash और L dash पे हम उतना ही आगे जाएंगे. We'll get the point P. So A L dash is equivalent to D dash P. So D dash P is equivalent to A dash L dash. So ये जितना भी डिस्टेंस था उतना ही हम D से आगे जाएंगे ताकि हमारा दोनों राइट एंड लेफ्ट के शोल्डर है फ्रंट एंड बैक के, इट विल मैच. सो वी गॉट द पॉइंट P. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमने P पे नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉप करी एंड विल नेम द पॉइंट एज O Q and then this is our P dash. So from Q now we'll move inward. Q से हम आगे right side जाएंगे, we'll move towards the right and we'll get the point Q dash such that Q dash is equivalent to 1/4 of an inch. तो 1/4 inch हम अंदर की तरफ जाएंगे और हमें point मिलेगा Q dash. Then we'll join P and Q dash with a straight line. एक straight line से join करेंगे and then Q dash और X को हम कर्व लाइन से ज्वाइन करेंगे. सो ये हमारा फ्रंट कर्व हो जाएगा इस तरह से. सो ये हमारा दोनों कर्व रेडी है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, फ्रॉम पॉइंट O डैश हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे टू एंड राइट की तरफ जाएंगे. बोथ B डैश एंड C डैश पॉइंट मिलेगा. 1/2 इंच हमने दोनों तरफ जाना है, 1/2 इंच टू द लेफ्ट एंड 1/2 इंच टू द राइट एंड वी गेट द पॉइंट B डैश एंड C डैश एंड देन विल जॉइन इट विद स्ट्रेट लाइन. हमने इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया. सो दिस इज़ आवर फाइनल block ready. We'll mark the green line. This is the back, this is the front. Front is mostly on fold, back since it's on fold so it will be cut 1 and back is mostly we cut separate so cut 2. So ये हमारा final pattern इस तरह से. This will be the block of back and this will be the block of front ready.